टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक योर मेकअप ग्लोई ड्यूई इन समर्स। क्योंकि समर्स में क्या होता है, हमारा मेकअप जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं करता हमारे फेस पे, बिकॉज ऑफ हमें फेस पे स्वेट आता है और बॉडी में भी स्वेट आता है, फेस पे भी स्वेट आता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो ज़्यादा देर तक हमारे फेस पे स्टे नहीं करता है। बट मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका मेकअप एक लॉन्ग टर्म तक समर्स में भी स्टे करेगा। सो बने रहिए मेरे साथ। If you are new to in my channel, please subscribe my channel and click the bell icon for all upcoming videos. So let's get started into the video. समर्स आ रहे हैं तो समर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपका स्किन का अच्छे से प्रेप होना। तो आपको मेक श्योर आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। प्रेप करने के लिए मैंने सारे स्टेप्स बता रखे हैं। आपको सीटीएम करना है अप्लाई, क्लिनजिंग करना है, टोनर करना है अप्लाई, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, एंड डोंट फॉरगेट द SPF सनस्क्रीन। या बिकॉज सनस्क्रीन ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको समर्स में आपके मेकअप को और ज़्यादा फ्लॉलेस बनाएगा और उसे आपको UV रेज से आपको बचाएगा। तो प्लीज़ अप्लाई सनस्क्रीन इन द समर्स, मस्ट अप्लाई। Okay, I'm not open my hair today because some sleek ponytail or sleek bun will be enhance your look, so I will tie my hair like this firstly, and for the makeup let's start. Correcting my face where I need to be correct my face, like some scars, yeah, any pigmentation in my face that I correcting with my color correcting. I am using Pro Concealer. If you don't apply any corrector on your face, so instead you using 1 to 2 shade darker in your skin tone shade of any color corrector, any foundation, to avoid that scars on your face. Like this, I put on color corrector on my face where I thought that I need darker areas in my face. मेरे फेस पे जहाँ भी पिगमेंटेशन है, मुझे लग रहा है ये फेस के डार्कर एरियाज है एज कम्पेयर टू माई होल फेस। सो ओनली दोज एरियाज आई पुट ऑन दिस कलर करेक्टर लाइक दिस। So here I am using damp beauty blender to blend it out my color corrector perfectly like this. Don't push it so much pressure on beauty blender that your excess of product will be faded out. Like this. Minimum coverage I have need. And I will use here foundation. I'm preparing for office look, so I don't need so much makeup on my face, so I keep it natural as much as I can. I'm just applying with the brush foundation on my face like this. Yeah, like that, and blend it with the beauty blender, because beauty blender will give you natural coverage but the brushes will give you high coverage, so I choose beauty blender. Like this. See how natural coverage is this. मेकअप को ना सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो डोंट बी पैनिक व्हेन यू अप्लाइंग फाउंडेशन के बहुत ज़्यादा मतलब वाइट हो गया है या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया है फेस पे। सो टेक्स टाइम फॉर हाउ नेचुरल इज दिस। सो एक्चुअली पता क्या होता है, समर्स का मेन जो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, समर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है,
आप बहुत ज़्यादा आपको स्वेट आता है फेस के ऊपर, तो आपको क्रीमी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, आपको मैट प्रोडक्ट्स की ओर जाना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीमी प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हो, नॉट एन इशू। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आपको पाउडरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, जितना ज़्यादा हो सके मैट, पाउडरी, ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको चूज करना है। जब भी आप फाउंडेशन परचेज करने जाए तो जिसके ऊपर लिखा था ना सुपर मैट लॉन्ग लास्टिंग, आपको उस तरह की फाउंडेशन को अपने लिए परचेज करना चाहिए, जिसमें लिखी हो ड्यूई, इल्यूमिनेटिंग, क्रीमी। आपको इस तरह की फाउंडेशन को अवॉइड करना चाहिए, दैट्स द ओनली की। और आपको ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट्स को नहीं, पाउडरी प्रोडक्ट्स को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। दैट विल रियली हेल्प्स यू टू मेंटेन योर मेकअप ऑन योर। कंसीलर, मैं यहाँ पे मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, जो मुझे लगता है वैसे तो नीट नहीं है, बट मैंने फाउंडेशन एग्जैक्ट अपनी स्किन टोन का लगाया है। सो जहाँ मुझे हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सी हल्की हल्की ब्राइटनेस चाहिए, ओनली on that points I will use my concealer on my face. So I'll take my beauty blender and blend it out. One product that my face looks so natural. Can you see? Minimum products give you more coverage as well as it stay longer on your face. Very little amount of powder contour and applying on my face. Very little, like this. Can you see? The shadow will be created. On my forehead area. Because powdery product will make up your stay longer. आपको जब भी अपने फेस को कॉन्ट्रोल करना है ना, आपको ऑलवेज कहाँ तक लेके आना होता है, हमें आईज के एंड तक, यहाँ तक लेके आना होता है, और नोज के ऐसे, नोज के एरिया में और आईज के एंड तक आपको कंट्रोल करना होता है क्या आपको अपने फेस पे। तो मेरा आईज का एंड का है यहाँ, और मैं अपना यहाँ तक कंट्रोल करूंगी, लाइक दिस, अपने नोज के यहाँ पे। इस तरह हम अपने फेस को कंट्रोल करते हैं, राइट टेक्निक टू कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट आई एम टेकिंग वेरी प्रिसाइज ब्रश for nose, like this. Brush I am using on this palette because I don't have a powder brush, I have a creamy blush, so I am using from this palette as well, powdery blush. So I am applying this in my, dust it off and apply on my cheekbone. A very little blush, not so much, very little. On the another side, ब्लश आपको अपने कॉन्टूर से हल्के से ऊपर प्लेस करना होता है। विल प्लेस above on your contour area, little bit on my nose because I like it. Blush apply on my nose like this. How natural is this? I'm using this Inside Cosmetics brow bone pencil. Brows in upward direction. I upload the video for eyebrow tutorial. Keep watching that video. I giving here the link in the description box. I'm depositing color from the middle of my eye. Like this. Using Maybelline Fit Me powder, blush. But if you have oily skin, you should apply loose powder, translucent powder, and to stay your makeup long lasting. Quickly apply it
For my eyes, I make it very natural. So I'm not making any color, put on color on my eyes. But I love putting kajal in my eyes. So I have this over here. This is an by kajal in my. Definitely go with the matte ones lipsticks. I am using Mion Superstay 15 Mocha lipstick. This is a very beautiful brown shade. So I apply on my lips. One main thing, so I put mascara. I'm using here Maybelline mascara. Using lashes because I keep it very natural. So I put on mascara in my eye like this. Can you see how much volume it will gives? This mascara and keep it very natural. एक्चुअली समर्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हमें बस बहुत ही मिनिमम मेकअप करना होता है. मेकअप फिक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन समर्स बिकॉज हाइड्रेशन ऑन योर फेस एंड कीप योर मेकअप लॉक फॉर समर्स. Of course, hope you like this look.